When you play simple Vidranga, like Prabhupada beat,
Srila Prabhupada ki jai, go Premananda Hari Bol. I'll give you my computer. Thank you very much. Not bad. You know you should get me. There's another spectacle in the red envelope. In the red one, that one I need because it is bifided, you know. I don't think it's in there. Is it? You know where it is? It must be somewhere, my stuff. It's a red one, red envelope, you know, the hard cover. Maybe in the room. What's the first word? Bhumir? 17. Bhumir? 10, 1, 17. 10, 1, 17. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhumir Dripta Nripa Vyaja Yajnanika Satayutai Akranta Buri Bharena Ramayan Sharanam Yayo Bhumir Dripta Nripa Vyaja Yajnanika Satayutai Akranta Buri Bharena Brahmanam Saranam Yayo. Somebody. Bhumir Drapta Nrpa Vyaja Nityanika Satayutai Akranta Bhuri Bharena Brahmanam Saranam Yayo And the lady. Daidyalika Satayutai Akranta Bhuri Bharena Brahmanam Saranam Bhumi
Bhumi, Mother Earth. Drita, puffed up. Ripa, Vyaja, posing as kings, or the supreme power personified in this state. Daitya, of the demons. Anika, of military phalanxes of soldiers. Satayutai, unlimited, by many hundreds and thousands. Akranta, being overburdened. Puribarina, by a burden of unnecessary fighting power. Pranayam, unto Lord Brahma. Sharanam, to take shelter. Yayo, went. Translation. Once, when Mother Earth was overburdened by hundreds of thousands of military phalanxes of various considered demons dressed like kings, she approached Lord Brahma for relief, purported by Srila Prabhupada. When the world is overburdened by unnecessary military arrangement, and when various kings are the executive heads of state, this burden causes the appearance of the Supreme Personality of Godhead, as it says in Bhagavad Gita, Yada Yada Hidharmasya, Glaniya Bhavati Bharata Abhyutamam Adharmasya Tadamanam Sajamyam. Whenever there was a decline in religious practice or descent of Bharata and a predominant rise of religion, at that time I appear myself. When the residents of this earth become atheists and godless, they descend to the state of animals, like dogs and hogs, and thus their only business is to bark among themselves. This dharma syaglani, deviation from the goal of life. Human life is meant for attaining the highest perfection of Krishna consciousness, but when people are godless in the presence of kings, unnecessarily puffed up with military power, their business is to fight and increase the military strength of the different stages. Nowadays, therefore, it appears that every state is busy manufacturing atomic weapons to prepare for a third world war. Such preparations are certainly unnecessary. They reflect the false pride of the head of states. The real business of a chief executive is to see the happiness of the mass of the people by training them in Krishna consciousness in different divisions of life. Chatuvanamaya Shritam Guna Karma Vibhagasaha. A leader should train the people as Brahmana, Kshatriya, Vaishya and Sudras, engaged in various occupational duties, thus helping them progress towards Krishna consciousness. Instead, however, rogues and thieves in the guise of protectors arrange for a voting system in the name of democracy. They come to power by hook or crook and exploit the citizens. Even long ago, asuras, persons devoid of God consciousness, became the heads of state, and now this is happening again. The various states of the world are preoccupied with arranging for military strength. Sometimes they spend 65% of the government revenue for such purposes. But why should people's hard-earned money to be spent in this way? Because of the present world situation, Krishna has descended in the form of the Hare Krishna movement. This is quite natural, for without the Krishna conscious movement, the world cannot be happy and peaceful. Viranjana Shlakaya Chakshunamritam Yena Tasmai Siguram Yamam Chaitanya Manovishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakanamam. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Bhakti. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare. So, in Hindi. अनुवाद एक बार माता पृथ्वी राजाओं के गर्भ में राजाओं के देश में गर्भ लाखों असुरों की सेना से बोझल हो उठी, तो वह इससे छुटकारा पाने के लिए ब्रह्मा के पास पहुंची। तात्पर्य: जब भी संसार अनावश्यक सैनिक व्यवस्थाओं से बोझिल हो उठता है और जब भी विविध आसुरी राजाओं का शासन होता है, तो इस बोझ के कारण भगवान को प्रकट होना पड़ता है। भगवद गीता 4
चौथे अध्याय 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म का प्राबल्य होता है तब तब मैं अवतीर्ण होता हूँ। जब इस धरा के निवासी नास्तिक तथा ईश्वर विहीन हो जाते हैं तो वे कुकड़ों सुकड़ों की स्थिति को प्राप्त होते हैं और उनका एक ही कार्य रह जाता है, वह है परस्पर भोंकना। यही धर्म से ग्लानि अर्थात जीवन के लक्ष्य से विचलन है। मनुष्य जीवन को कृष्ण भावनामृत में सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त है। प्रधान शासक का असली कार्य तो जीवन के विभागों में सामान्य लोगों को कृष्ण भावनामृत का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुखी बनाना है। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुरु कर्म विभागसम। नेता को चाहिए कि लोगों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र का प्रशिक्षण दे और उन्हें अनेक वृत्तिपरक कार्यों में लगाए जिससे वे कृष्ण भावनामृत की दिशा में प्रगति कर सके। किंतु हो यह रहा है कि चोर तथा उचक्के रक्षक के वेश में मतदान पद्धति की व्यवस्था करते हैं और प्रजातंत्र के नाम पर वे ये केंद्र प्रकार सत्ता में आकर प्रजा का शोषण करते हैं। यहाँ तक कि बहुत पुराने जमाने में असुरगण जो कि इस भावनामृत से विहीन थे राज्य के प्रधान बन गए थे और अब फिर से वैसा ही हो रहा है। संसार के विभिन्न राज्य सैन्य शक्ति को अब व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं। कभी कभी तो वे इस कार्य के लिए सरकार की आय का 65% खर्च कर देते हैं, किंतु लोगों की कठिन कमाई को इस तरह क्यों भूखा जाए? Yada yada hi dharmasya, the word religion has the tendency to deteriorate. तो यहाँ पर बताया गया है कि जो धर्म है समय के साथ धीरे धीरे उसमें कमी होती है। Religion in itself, word comes from Latin word, re ligare. Re means again, and ligare means to connect. रिलीजन शब्द एक लैटिन शब्द रेनिगर से आता है। Re ligare. Re ligare. Ligare means to connect. कनेक्ट। Huh? टू कनेक्ट। No, to reconnect. टू रिकनेक्ट। Re ligare, connect, to reconnect. फिर से संबंध स्थापित करना, ये धर्म का मतलब होता है। So if you think about it, that means we have been connected before with God. इस शब्द के बारे में अगर सोचें तो हमें ये समझ में आता है कि हम पहले भगवान से संबंधित थे। There was a time when, as the Christian says, Adam and Eve were in paradise. जिस प्रकार से कृष्ण बोलते हैं कि सारे जीव उनके अंश समान हैं। But then they fell down. और उसके बाद उनका पतन हुआ। Because of what? किस कारण से उनका पतन हुआ? Mental speculation. मानसिक अवधारणा, भूल धारणा के कारण। If you read the Bible, I come from a Christian background. The idea was you shouldn't eat from the forbidden tree. तो क्रिश्चियन बाइबल में अगर देखा जाए, क्योंकि मैं बचपन से क्रिश्चियन परिवार से था, तो उसमें भी बताया गया है कि एक Then the snake came. Sarp came and said, एक सांप वहाँ पे आया। if you eat from this tree, you become as good as God. तो उसने हमें बोला कि अगर आप इस पेड़ का एक फल खाएंगे तो आप भगवान के जैसे बन जाएंगे। And it's a simple story. It's a allegorical story. It's not really happening. There's no Adam and Eve. Adam and Eve is you and me, basically speaking. तो ये जो कथा बाइबल में आती है, ये वास्तविक कथा नहीं है, परंतु वृत्तिपरक कथा है, जिसके द्वारा किसी संबंध, किसी सिद्धांत को समझाते हैं। Bhakti Siddhanta said that, actually said, like Adam and Eve, we fell from the spiritual sky, like, how do you call it, meteors, a star that falls. How do you call that? That phenomena you see in the evening, the star. पिंड, आकाश पिंड। तो वाइट जिसे हिंदी आकाश पिंड, उल्का पिंड। तो ये कथा सिद्धांत सही बताते हैं कि आदम और ईव जो थे वो आध्यात्मिक संसार से उल्का पिंड के जैसे इस संसार में गिरे। So that's our story right there. And for some reason we fell from the spiritual world. तो ये कथा वहाँ पे भी है कि कुछ कारणों से हम आध्यात्मिक संसार से नीचे गिर गए। Everybody had his own foolish reason. हर व्यक्ति के अपने मूर्खतापूर्ण कारण हो सकते हैं। But one thing is sure, there is some degree of there was a little enviousness there of Krishna. We wanted to be like Krishna.
पर एक वस्तु तो है कि वहाँ पे हमारी कुछ तो ईर्ष्या थी भगवान के लिए, क्योंकि हम कृष्ण के जैसा बनना चाहते थे। And so in the material world, everybody wants to be like God. तो इस भौतिक संसार में सभी लोग भगवान बनना चाहते हैं। Mr. Putin wants to be like God. Mr. Biden wants to be like God. The man of the Lord of the family, he wants to be God. The head of an association for rabbit grazing, he wants to be God. Everybody wants to be God. Everybody in this material world has his God project. तो पुतिन भी भगवान बनना चाहते हैं और बाइडेन भी भगवान बनना चाहते हैं और बड़ी-बड़ी संस्थाओं के जो मालिक हैं वो भी भगवान बनना चाहते हैं। तो इस संसार में सभी अपने आप को भगवान बनाने का प्रोजेक्ट चला रहे हैं। Everybody wants to do it in his own way. हर व्यक्ति अपने तरीके से कार्य करना चाहता है। Even when it comes to spiritual life, जब आध्यात्मिक जीवन का भी सवाल आता है, everybody wants to do his own way. हर व्यक्ति अपने तरीके से करना What is it? चाहता है। Yatapat, tatapat? यतो मत ततो पर। Yeah, that one. Can you say? यतो मत ततो पर। That's it, you know. Everybody according to his own idea, to his own taste. हर व्यक्ति अपने खुद के विचार के आधार पे आगे बढ़ना चाहता है। So we have to understand that even in the material world, it is common sense. If you want to learn yoga, you go to a yoga teacher. If you want to learn Qigong, you learn to go to Qigong teacher. If you want to learn about quantum physics, you go to an authority of quantum physics. You learn from somebody. तो भौतिक संसार में भी बहुत हम सामान्य देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति को कुछ योगा सीखना है तो वो योगा शिक्षक के पास जाते हैं। The child learns to go to the toilet from the mother. जो बच्चा है अपनी माँ से सीखता है कि टॉयलेट कैसे जाना है। We learn how to drive cars by going to a car teacher, driver's license. कार चलाना सीखते हैं किसी कार चलाने वाले के पास जाके उससे सीखते हैं। In every sphere of life, we go to a teacher. तो जीवन में हमेशा हम किसी न किसी शिक्षक के पास जाते हैं। But when it comes to spiritual life, everybody has his own idea. और जब आध्यात्मिक जीवन की बात आती है तो हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से करता है। It is that yata tat pata, what is it? That's it. Everybody has his own idea. All roads lead to the same goal. वो सोचते हैं कि किसी भी रास्ते से जाओ एक ही मंजिल पे पहुंच जाएंगे। This is called mental speculation. इसको मानसिक भूल धारणा। That is a disease. ये बीमारी है। Like one time Prabhupada, in his last days, I happened to be there actually, in his last 3 weeks. So at one stage, somebody gave him medicine. He wanted some medicine. तो प्रभुपाद जी जब अंतिम समय में वृंदावन में थे, उस समय प्रभुपाद कुछ दवाई चाहते थे और किसी भक्त ने उनको कुछ दवाई दी। That was 2 days before he actually departed. वो उनके संसार से जाने के 2 दिन पहले की बात। And so Prabhupada asked the servant, "Did you close the bottle?" तो प्रभुपाद ने अपने सेवक से पूछा कि आपने दवाई की बोतल को बंद किया है क्या? Oh, Prabhupada, I forgot. तो उन्होंने बोला नहीं, प्रभुपाद को भूल गया। Prabhupada was a medical man. प्रभुपाद स्वयं एक दवाई वाले व्यक्ति थे। Open the bottle, takes the tablet out, close the bottle, put the bottle away. तो प्रभुपाद बोतल खोलते थे, उसमें से दवाई बाहर निकालते थे, फिर बोतल बंद करते थे, फिर अपनी जगह पे। Otherwise, you knock the bottle over. अन्यथा अगर बोतल खुली रहेगी तो गिर जाएगी। So then he said, "That is your disease," he said, "all of you." तो तब प्रभुपाद ने उस शिष्य से बोला कि ये आप सभी की बीमारी The है। servant didn't close the bottle, and Prabhupada, "That is your disease, all of you." तो एक सेवक ने दवाई की बोतल बंद नहीं की और प्रभुपाद बोल रहे कि ये तुम सभी की बीमारी You है। know how to open bottles, you don't know how to close them. तो आप सभी जानते हो कि बोतल को खोलना कैसे है, उसको बंद करना नहीं जानते। You start so many new things, आप बहुत सारी नई चीजें चालू करते हो, but you don't see the consequences. परंतु आप उसका परिणाम नहीं देखते। This is modern society. ये आधुनिक समाज है। Nobody knows how to stop the environmental catastrophe. Nobody. कोई नहीं जानता है कि पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए। Rivers are polluted, oceans are polluted, the air is polluted, the water is polluted, food is polluted, the bodies are polluted. आजकल सब कुछ प्रदूषित हो गया है, नदियाँ प्रदूषित हो गई हैं, हवा प्रदूषित हो गया है, जल प्रदूषित हो गया है, जमीन प्रदूषित हो गई है। People opening bottles, they don't see the consequences. तो लोग बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं परंतु उसके परिणाम को नहीं देख पाते। So we have to take shelter in Krishna to find out, my dear Lord, what do you want me to do? तो हमें भगवान कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए, वो ये पूछना चाहिए कि भगवान आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? How can the world become peaceful? कैसे ये संसार को शांत बनाया जाए? People have different propositions.
लोगों के अलग अलग मानसिक अवधारणाएं हैं। This idea, that idea, किसी का ये तरीका है, किसी का वो तरीका and है। there is no peace. तब तक कोई शांति नहीं One होगी। time, one yogi, I will not name his name, I know his name, but I won't say it. So he approached Prabhupada in Hawaii. And he said, Swamiji, we have a conference of peace. I got so many famous gurus together, we want to sit together and talk about peace. एक बार एक योगी प्रभुपाद जी के पास आके प्रभुपाद जी से पूछते हैं कि हमारी एक शांति के लिए एक समीक्षा है, पीस कॉन्फ्रेंस है, तो हम सभी साथ में आके शांति के बारे में बात करें। The Prabhupada said, peace conference you can have if you agree on one point. If you agree on one point, आप शांति की बात तभी कर सकते हैं जब आप सभी एक ही धरातल पर हैं। there's peace. तभी शांति हो सकती है। That point is, कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है and everything is his property. और सब कुछ उनकी संपत्ति है। Bas. तभी शांति हो सकती है। That's it. Krishna's opinion is final. कृष्ण ने जो बोला है वो मान सकते हैं। He said that in Bhagavad Gita. भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा भी है। Bhaktanam yagatapasam sarvalokam suridam sarvabhutanam yatvam santam ritsati is only possible by this Bhaktanam yagatapasam sarvalokam suridam sarvabhutanam. That's a peace formula right there. Then we can have peace. तो भगवान ने बताया है कि शांति तभी मिल सकती है जब ऊपर की तीन वस्तुएं प्राप्त हो। भोक्ता एकतपसाम सर्वलोकमहेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां। So Prabhupada asked the yogi, can you accept that Krishna is Supreme Personality of Godhead and everything is property? तो प्रभुपाद ने उस योगी से पूछा कि क्या आप ये स्वीकार करेंगे कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और सब कुछ उनकी संपत्ति है? The yogi said no. योगी ने बोला कि नहीं। So you will never have peace. प्रभुपाद ने बोला तब आपको कभी शांति नहीं। I'm not going to this conference. प्रभुपाद ने बोला मैं इस कॉन्फ्रेंस में जाने वाला नहीं। Very simple. Krishna's opinion is final. बहुत सामान्य है कि भगवान कृष्ण ने जो बोला वो सत्य है। No other opinion is allowed. कोई भी दूसरा ओपिनियन At least in the Hare Krishna movement it should be like that. तो हरे कृष्ण आंदोलन उस तरह से होना चाहिए। But people have this idea, that idea, opening this portal, that portal, so many things nowadays, particularly in modern ISKCON. परंतु लोगों के अपने अपने आइडिया होते हैं, वो कभी ये बॉटल खोलते हैं, वो बॉटल खोलते हैं, कितनी सारी वस्तुएं चलती रहती हैं। In my opinion this, in my opinion that. ये मेरा मत है, ये मेरा मत है इस तरह। But there's only one opinion. और यहाँ पर केवल एक That's ही मत the है। opinion of Krishna. ये कृष्ण का मत है। And the opinion of the Acharya who is representing Krishna. और हमें प्रयास करना चाहिए कि कृष्ण के उस मत को हम Simple as that. This is how we, if you want to discern what is truth, if you want to know what is truth, we have to follow in the footsteps of Acharya. Narottam Thakur says, Guru, Sadhu, Shastra. That's it. This is how you can know what is true and what is not true. तो अगर आप सत्य को जानना चाहते हैं तो आपको उसको पहले स्वीकार करना होगा, जैसे नरोत्तम ठाकुर ने बताया है कि गुरु साधु शास्त्र को स्वीकार करना होगा। This is the way how we understand what is true. ये तरीका है जिसके द्वारा हम सत्य को Otherwise we are just thinking. अन्यथा हम केवल सोचते रहेंगे। One devotee said, Srila Prabhupada, sometimes I'm thinking. एक भक्त ने प्रभुपाद से एक बार बोला, प्रभुपाद कभी-कभी मैं सोचता हूँ। And Prabhupada interrupted and said, don't do that. प्रभुपाद ने बोला नहीं वो मत करो। Because he knew. क्योंकि वो जानते थे He was speculating. कि वो भक्त कुछ न कुछ भूल धारणा करता है, मन में कुछ और। You have to listen to Shastra. Yashastra vidim utri javatati kama karata. If somebody acts according to his own will, nasa siddhim avapnoti, no siddha, no perfection, no sukham, no happiness, no paramgatim, no can he achieve the supreme destination. Right in Shastra, Krishna says. गीता में बात बताया गया है कि नसा सिद्धि में अभाव, जो शास्त्र की बातों की अवहेलना करता है उसको सिद्धि भी नहीं मिलती है। That's why Krishna said, Prabhupada said, what Krishna says is final. प्रभुपाद ने बोला कि भगवान कृष्ण जो बोलते हैं He asked this yogi, can you accept that? प्रभुपाद ने उस योगी से पूछा कि आप उसको स्वीकार करेंगे क्या? He said, no. योगी ने बोला कि नहीं करूँगा। He said, you go. प्रभुपाद ने बोला कि फिर मैं नहीं आऊँगा। Prabhupada was not interested. Prabhupada was not interested. प्रभुपाद उसको वहाँ जाने में ज़्यादा। There was one famous guru in my time, when I was a young devotee in Krishna consciousness. He was a debauch.
जब प्रभु जी बता रहे हैं जब वो नए भक्त थे कृष्ण भक्ति में उस समय बहुत प्रसिद्ध गुरु थे And उनका आचरण अच्छा नहीं था and his disciples knew that he had so many female associations and all this. और उनके शिष्यों को भी पता था कि उसकी बहुत सारी महिलाओं के साथ उसके संबंध हैं And he told them, you have to hear what I say, but don't do what I do. That was it. तो उस गुरु ने अपने शिष्य से बोला था कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो जो मैं कर रहा हूँ वो मत करो Hear what I say, but don't do what I do. जो मैं बोलता हूँ वो सुनो जो मैं करता हूँ वो मत करो How is he Acharya? ये कैसे काम चल होगा Acharya, word is action, and his life has to be on his life and his word has to be on the same level. तो जब अगर कोई व्यक्ति आचार्य है तो उसका आचरण और उसकी बोली एक ही स्तर पे होगी And he performed in the Astrodome in Houston. I remember that. He performed the Rasa Leela, this rascal. और उन्होंने उस गुरु ने ह्यूस्टन में रासलीला भी की थी And there were pictures. The devotees showed proper picture of this God dressed as Krishna with the flute, performing Rasa Leela. उसने कृष्ण के जैसे वेश भी पहना था और बांसुरी भी बजा रहा था और रासलीला किया था Prabhupada became so angry when he saw that. He said, I urinate in his face. प्रभुपाद बहुत गुस्सा हुआ उसको देख के और प्रभुपाद ने बोला मैं इसके चेहरे पे पेशाब कर दूंगा Prabhupada could be very angry for Krishna, प्रभुपाद बहुत गुस्सा not for himself. अपने लिए गुस्सा नहीं होते थे परंतु Himself, Prabhupada was most humble. अपने स्वयं के लिए तो प्रभुपाद बहुत विनम्र थे I remember one time we went to, in Sweden, we went to a university to preach Prabhupada. एक बार हम एक विश्वविद्यालय में प्रचार करने के लिए गए And the university was a very Naxalite university, very left, communist, Maoist. और वो विश्वविद्यालय जो था वो बहुत वामपंथी था We have Maoists here in Nepal. Maoist, माओइस्ट वहाँ पे जो लोग थे वो माओइस्ट थे Maoist, Leninist, Marxist, मार्क्सवादी थे anarchist. There's so many different types. Trotskyists, there's so many different types of communism. Right? They don't agree. बहुत सारे विभिन्न प्रकार के साम्यवाद हैं और उस सभी को मानने वाले लोग वहाँ पे थे But there's one thing that they all agree on. वो सभी लोग एक बात को मानते हैं Classless society. कि समाज में कोई वर्ग नहीं होना चाहिए No, whether you're a Marxist, a Maoist, a Trotskyist, a Leninist, whatever, Maoist, whatever you may be, whether you follow Ho Chi Minh, there's one agreement. There are no classes. लेनिनवादी हो चाहे मार्क्सवादी हो चाहे माओवादी हो परंतु एक बात सभी मानते हैं कि Is that समाज true? में कोई वर्ग नहीं होना चाहिए Is that true? क्या ये सत्य है So Prabhupada sat down in this university, he had no idea. And he said, so Krishna says, Chatuvanama Shristam Guna Karma Vibhagasha. There are 4 classes of men. तो प्रभुपाद ने बोला कि समाज में 4 प्रकार के वर्ग होते हैं लोगों में I mean, Prabhupada was so brave, he had such a nerve, to go into university that was left, radical left. And he says there are 4 classes of men. Krishna says, he believed Krishna. He said, Krishna says, and that's it. There are 4 classes of men. तो प्रभुपाद जैसी यूनिवर्सिटी में ऐसे विश्वविद्यालय में गए जहाँ पे इस प्रकार का वातावरण था वहाँ जाके प्रभुपाद ने बोला कि कृष्ण ने बताया है कि 4 प्रकार के लोग होते हैं All the students were in a shock when he said that. सारे के सारे जो छात्र थे वो अचंभित हो गए थे प्रभुपाद ने इस प्रकार से He would come into this university and preach about 4 classes of men. वो अचंभित थे कि ये व्यक्ति यहाँ इस विश्वविद्यालय में आके 4 प्रकार के 4 वर्गों के लोगों की बात And Prabhupada kept talking like this. और प्रभुपाद उस प्रकार से बताते रहे They are first class men, Brahmana, second class men, Kshatriya, third class men, Vaishyas, and fourth class men, Shudras. तो प्रभुपाद इस तरह से बता रहे थे कि प्रथम श्रेणी के लोग ब्राह्मण होते हैं द्वितीय श्रेणी के क्षत्रिय तृतीय श्रेणी के You can't change that. That's part of human society. You cannot change that. प्रभुपाद ने बताया कि वो तो समाज में हमेशा रहते हैं आप उसको बदल नहीं सकते So finally somebody stood up and said like this, I sat right there, where you sit, this distance. He said, of course, Swami, you think you're first class, sitting on the high seat, surrounded by followers who bow down to you, covered with flowers. Are you first class?
तो एक व्यक्ति ने खड़े होकर पूछा स्वामी जी को हाथ करके कि स्वामी जी आपको क्या ऐसा लगता है कि आप फर्स्ट क्लास में प्रथम श्रेणी के हैं, हम सभी आगे आपके चरणों में सिर झुकाएं और आप हमें आदेश देंगे। Can you imagine in front of Prabhupada somebody stands like this? कोई इस प्रकार से प्रभुपाद को उंगली दिखा के ऐसा चैलेंज कर रहा था। My blood was boiling. प्रभु जी का खून खौल रहा था। I come from a German background, they're warriors, you know. I would have liked to Prabhupada get him, I would have get up, ripped his heart out and drink his blood in front of everybody. Prabhupada, he said, no, he said, you misunderstand me. He said, I'm not first class. I'm fifth class. Dead silence in the room. Dead silence. Silence in the room. Then Prabhupada said, because, and I saw it, he said, because I'm the servant of everyone. When Prabhupada said that, two big tears rolled down his cheeks. I saw that because I was sitting right there. He was the best of all. He was the most humble. I'm the servant of everyone. Only Prabhupada has the strength to speak like that. You know, he was most humble. And he was most brave at the same time. One time my godbrother, this is way back in 1970, Ranshaw, he asked Prabhupada in London, he said, Prabhupada, you are brave that you came to the West. And Prabhupada, that is a fact. He said, when I was a young man, I was a Gandhian. So all the students, they went to Gandhi. So one of we stood in front of Victoria Memorial in Calcutta. It was just in construction. It was the bamboo scaffolding was there all the way to the top. Right? Bamboo scaffolding? Bamboo? Bamboo scaffolding all the way to the top. And somebody said, of his friends, he said, somebody should go up there and hold the national flag of India. Do it. He said, I'm not going to do it. And Prabhupada said, because you're a coward. Give me that flag, I do it. Give me the flag. And Prabhupada climbed all the way to the top of the Victoria Memorial and hoisted the Indian national flag. That was a very brave thing. If he would have been caught, they would have immediately hanged him for high treason. In the British time, hoisting the Indian flag of independence, that's high treason. जब ब्रिटिश लोग इस भारत का शासन कर रहे थे उस समय तो भारत का झंडा विक्टोरिया मेमोरियल के ऊपर लगाया तो बहुत बड़ा जुर्म था. See how Prabhupada had very courageous men. तो प्रभुपाद बहुत साहसी व्यक्ति थे. In going to the Western countries alone without any support. पाश्चात्य देशों में बिना किसी सहायता के अकेले जाना. And speaking Krishna Katha and very strong philosophy. और कृष्ण कथा सुनाना और पूरा सिद्धांत बताना. And Prabhupada came in one of my godbrothers, who was it? One second. Umapati. It's called a senior moment. It takes a little time till it drops. Umapati said, Srila Prabhupada, what you say about the position of women will not be very popular in America. And Prabhupada said, I'm not going to change the truth for the Americans. I'm not going to change the truth
for the Americans. प्रभुपाद ने बोला कि मैं सत्य को अमेरिका के लोगों के लिए नहीं बदल सकता, Because according to Varnashram Dharma, everybody has his Dharma. क्योंकि वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से सभी के अपने अपने धर्म होते हैं. The men have a Dharma, the women have a Dharma, the king has a Dharma, the Kshatriya has a Dharma, everybody has a Dharma. पुरुषों का धर्म होता है, स्त्री का धर्म होता है, क्षत्रियों का धर्म होता है, राजा का धर्म. And this way society can function. तो इस तरह से समाज कार्य करता है. There's a way for brahmachari to be a brahmachari, grihastha to be grihastha. There's, for every person there's a path described. It is, Krishna says it's dangerous to follow somebody else's path. तो हर वर्ण आश्रम जैसे ब्रह्मचारी के लिए उसके कर्तव्य है, गृहस्थ के लिए उसके कर्तव्य है. भगवान कृष्ण ने बताया है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य निभाना चाहिए, क्योंकि दूसरे के कर्तव्य निभाना भयानक हो सकता है. Just like in Western countries now, feminism is a big thing. जैसे पाश्चात्य देशों में आजकल Equality of men and women in all respect. पुरुष और स्त्रियों को समान तरीके से समान भाव से देखने का जो. On the spiritual level, yes, we are all equal. आध्यात्मिक जीवन में हम जानते हैं कि वो समान है, क्योंकि when we come to the material world, everybody has his dharma. परंतु जब वो आत्मा भौतिक संसार में आते हैं तो भौतिक शरीर के आधार पर उनके अलग-अलग धर्म होते हैं. From a spiritual point of view, the king is a soul, right? आध्यात्मिक दृष्टि से राजा भी एक आत्मा है, and the dog is a soul. और कुत्ता भी एक आत्मा है. Does it mean you put the dog on the same seat with the king? परंतु इसका ये मतलब नहीं कि हम कुत्ते को राजा के सिंहासन पर बिठाएंगे. No. ऐसा नहीं हो सकता. When Krishna was on this planet, he's God himself. He paid obeisances to Yudhishthira, who was elder than him. जब कृष्ण इस संसार में थे तो वो खुद युधिष्ठिर को सम्मान देने के लिए अपने He सिंहासन से embraced Arjuna as a friend in Sakya Rasa. अर्जुन को वो अपने गले से लगा कर मित्र के He accepted obeisance from Nakula and Sahdev. God himself follows that. और नकुल सहदेव से वो नकुल सहदेव उनको प्रणाम करते, तो भगवान ने भी इन सिद्धांतों का पालन किया. But people have become so foolish that they think they can do whatever they like. परंतु आजकल लोग इतने मूर्ख हो गए हैं कि वो सोचते हैं कि जो वो चाहे वो कर सकते हैं. Yesterday I was telling somebody that in 1912, कल मैं किसी भक्त को बता रहा था कि 1912 में a group of ladies from America appeared in the court of the Emperor Wilhelm II in Germany. तो कुछ महिलाएं एक राजा के कोर्ट में आई, तो अपने आप को प्रदर्शित किए. And they wanted to talk to the emperor. और वो राजा से बात करना चाहते थे. The emperor was sitting in audience. His wife was sitting there, and a whole courtroom full of people. तो वहाँ कोर्ट में बहुत सारे लोग थे, राजा थे, उसकी पत्नी थी, बहुत सारे मंत्री थे. And so the master of ceremony came. Your Majesty, a team of ladies from America want to talk to you. तो राजा वो मंत्री आया, उसने बताया कि अमेरिका की कुछ महिलाएं आपसे मिलना चाहती हैं. He said, let them come. उनको आने दीजिए. He said, so you want to talk to me? Speak. तो राजा ने बोला कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, बताइए. What is your philosophy? आपका सिद्धांत क्या है? We think that men and women are the same. उन्होंने बोला कि हम सोचते हैं कि पुरुष और स्त्री बराबर हैं. He said to his wife, I always wanted to have a baby. I always wanted to have a baby, the king said. The king said, I always wanted to have a baby. He was laughing. The whole court laughed. How is it possible? How is there equality? Everybody is different. Everybody has his service. Everybody has his dharma. And he told them, he said, you ladies, you get married. Have some children, have a good husband, you will be happy. You will never be happy in this frame of mind. That's a fact. The whole Varnashram Dharma system, the most, how do you say, essential building block of every society is a family. वर्णाश्रम धर्म जो है वो हर परिवार का, हर समाज का वास्तविक आधार है, आधारभूत शिला है. And if in family, husband has a role, the wife has a role. एक घर में पति का भी अपने कार्य होते हैं, पति के कर्तव्य होते हैं और पत्नी के भी अपने कर्तव्य. I mean, I come from a Christian background. मैं क्रिश्चियन परिवार से आया हूँ. Very traditional family.
बहुत क्रिश्चियन की बहुत पारंपरिक परिवार से We were 7 children. हम 7 बच्चे थे My grandfathers on both sides had 16 children. और मेरे दादाजी की तरफ से दादाजी के 16 बच्चे दादा के 16 बच्चे थे और दादी की तरफ से भी 16 बच्चे I mean, if you live in a family with 7 children, that's already like living in a zoo. तो अगर आप 7 लोग परिवार में हैं, तो और भी ऐसा लगता है जैसे चिड़ियाघर में रह रहे हैं But it worked. तो उस तरह से कार्य होता था Why did it work? क्यों ये कार्य करता था Because I, nor my sisters, nor my brother have ever heard a single argument between my mother and my father. We never heard an argument. क्योंकि हम सभी लोग शांति से रहते थे क्योंकि हमने माता पिता के बीच में एक बार कभी लड़ाई नहीं की Between my mother and my father. He was a husband, she was a wife. He's a father, she's a mother. Everything was clear. तो क्योंकि मेरे पिता के कार्य करते थे माँ के कार्य करते थे और सब कुछ स्पष्ट था There was peace in the house. और घर में शांति थी Simple. Everybody can understand that. सभी लोग समझ सकते हैं इसको There was peace in the house. I never fought with. I asked my sister, I asked my brother, have you ever seen them fighting? Never. तो मैंने अपने भाइयों से भी पूछा बहनों से भी पूछा कि आपने फिर माता पिता को Therefore, although having 7 children is like living in a zoo, there was peace in the house because the positions were very clear and defined. जब ये 7 बच्चों के साथ रहना एक चिड़ियाघर में रहने के जैसा है परंतु कभी कभी हमेशा शांति रहती थी क्योंकि सभी अपने अपने कर्तव्य के हिसाब से कार्य करते थे In this way, everybody has his duty, everybody has his role. तो इस तरह से हर व्यक्ति के अपने कर्तव्य होते हैं कार्य होते हैं In this way, there is peace. और तभी शांति होती है And if people have their own ideas, अगर लोगों के अपने खुद के विचार हैं which is now the common denominator of human society, that everybody does his own thing, क्योंकि अभी मानव समाज में सामान्य हो गया है कि हर व्यक्ति अपना काम करना चाहता there है can't be peace. तब शांति नहीं हो सकती There can only be peace, oneness in authority. There's peace. शांति तभी हो सकती है जब So if we all follow Krishna, then there's peace. जब हम भगवान कृष्ण को अनुसरण करते हैं तभी शांति हो सकती है And if we follow our own mind, there will never be peace. अगर हम केवल अपने मन को मानेंगे तो शांति कभी नहीं होगी And that's the disease. That's why yada yada hidharmasya, religion deteriorates. इसी कारण से धर्म जो है उसका ह्रास होता है Religion is pure. धर्म अपने आप में शुद्ध है Religion just means to love God. That's all. धर्म का मतलब होता है कि भगवान को प्रेम करना Even in the Bible, Jesus said, they asked him, what is the highest law? He was asked by the teachers of the law, by the Pharisees, by the teachers. जीसस ने भी इस प्रकार से बताया उनको एक बार धर्म के शिक्षकों ने इस प्रकार से पूछा था Jesus was challenged. They were envious of him. जीसस को इस प्रकार से So what is the highest law? उनसे पूछा गया था जीसस से कि सबसे ऊंचा धर्म क्या है Should love your Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. जीसस ने बोला कि भगवान को प्रेम करना अपने हृदय के साथ अपने मन के साथ अपने विचारों के साथ अपने कार्यों के बस साथ ये बस सबसे ऊंचा धर्म That's our teaching. That's the highest. Savai pungsam paro dharma. What is the highest dharma? Yato bhaktir adhoksate. Yeah. To satisfy Krishna is the highest goal of life. भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना जीवन का सबसे ऊंचा लक्ष्य है You take Bhagavatam or you take Bhagavad Gita or you take even the Christian Bible. The understanding is the highest goal is to please God. आप भगवद गीता लीजिए भागवतम लीजिए क्रिश्चियन बाइबल लीजिए तो अंडरस्टैंड उसका विचार यही है कि सबसे ऊंचा धर्म है कृष्ण को प्रेम करना But the modus operandi, the way how people work in the material world is everybody wants to serve himself. इस संसार में जिस धारणा से सभी लोग काम करते हैं वो धारणा है कि हर व्यक्ति अपनी सेवा करना चाहता है In my opinion this, मेरे मत में ऐसा होना चाहिए in my opinion that. मेरे मत में ऐसा वैसा होना चाहिए I asked, and when I was in America, I asked one lady, she's a very outspoken liberal lady. जब अमेरिका में था तो मैंने एक स्त्री से बात की तो उसने बहुत And she has so many ideas about the Hare Krishna movement. उसके पास बहुत सारे ऐसे विचार थे And I asked her, I told her, what you say there is not what Prabhupada says, that's what you say. तो मैंने उससे बोला कि आप ये जो बोल रहे हैं ये तो वो नहीं है जो प्रभुपाद ने बोला था ये तो आप बोल रहे हैं I asked her, where's your love for Prabhupada? मैंने उनसे पूछा कि प्रभुपाद के लिए आपका प्रेम कहाँ है She said, I love Prabhupada, उन्होंने बोला कि मैं तो प्रभुपाद को प्रेम करती हूँ but I don't like what he says.
और मैं ये वो नहीं पसंद करते जो वो बोलते हैं। What is he doing in the Hare Krishna movement? Get out. तो मैंने उससे बोला कि आप हरे कृष्ण मूवमेंट में क्या कर रहे हैं? यहाँ से This is not your movement. This is Prabhupada's movement. तो ये आपका कोई संस्था नहीं है, प्रभुपाद का It's संस्था not my movement. It's not your movement. ये मेरा भी संस्था नहीं, आपका संस्था नहीं, प्रभुपाद का But संस्था। Prabhupada says it's final. जो प्रभुपाद ने बोला वो पूर्ण है, Because he repeats what Krishna says. It's final. क्योंकि प्रभुपाद वो बताते हैं जो कृष्ण बताते हैं। No other opinion is allowed. कोई दूसरा ओपिनियन If other opinions allowed, the whole thing turns into confusion. अगर सभी के विचारों को अलाउ करेंगे तो सब कुछ कंफ्यूजन में चला जाएगा। There will be factions. और अलग-अलग खंड हो There जाएंगे will be fighting. और लड़ाइयाँ होंगी। And people become asara, they become useless. तो फिर हम सभी यूजलेस हो जाएंगे। So Arjuna, in the beginning also he had his own idea. तो भगवद गीता के प्रारंभ में अर्जुन के अपना स्वयं के विचार थे। He was moved by the sense of compassion. वो दया की भावना से बहुत प्रेरित थे। And he saw his relatives on the battlefield. He said, how can I fight against them? उसने अपने मित्रों को देखा युद्ध क्षेत्र में जैसे उसको लड़ाई करते। Better I become a beggar. उसने सोचा कि मैं भिखारी बन जाऊंगा, वो अच्छा। And Krishna said, you can't do that. कृष्ण ने बोला कि आप वो नहीं कर सकते। Your dharma is to protect religion. आपका धर्म है कि आप धर्म की रक्षा करें। These people were irreligious. ये लोग अधर्मी हैं। It says five, what is it? Five enemies. They are one who steals his land, one who steals your wife, one who steals five aggressors. Five aggressors should be killed. Says in scripture. तो ये छह प्रकार के आगताई जो हैं इनको मार देना चाहिए। So Krishna says, and I told this boy today in the morning, we had this discussion. Krishna said, how can these impurities come upon you? तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि आपके अंदर ये अशुद्धता कैसे आ गई? He tried to be merciful, Arjuna, अर्जुन तो कृपामय होना चाहते थे, but it was foolish mercy. परंतु ये मूर्खतापूर्ण कृपा थी। It's foolish mercy. ये मूर्खतापूर्ण था। Better is to establish religion. उससे अच्छा है कि धर्म को स्थापित करना। And so once, and I gave you the example, remember in the morning, when the father sees that the uncle sees that the father is stealing, he has to arrest him. If I see that I'm a policeman now, and I see my relative is stealing in a shop, I have to arrest him. अगर मैं पुलिस हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे रिश्तेदार चोरी कर रहे हैं तो मुझे उस रिश्तेदार को अरेस्ट करना होगा। Is that true? ये सत्य है। Even a king would arrest his own son in Vedic time. राजा भी अपने बेटे को कभी बंद कर देगा, बेटे गलत कार्य करेगा। Punish his own son. अपने बेटे को दंड दे सकता है। If he doesn't do that, then his superintendent will say, how can these impurities come upon you? अगर राजा ऐसा नहीं करता है तो उससे मंत्री लोग उससे बोलेंगे कि आप ये गलत काम क्यों कर रहे हैं? They don't behoove a person who knows a higher value of life, namely the life of a policeman, to protect the citizen, protect the government, protect the law. You didn't do that. Get out. वो लोग बोलेंगे कि सबसे ऊंचा धर्म है राजा के लिए अपने प्रजा की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना। Isn't it? नहीं कर रहा है तो बाहर चले जाएंगे। That was Arjuna's position. वो अर्जुन की स्थिति। So Arjuna had some sentiment. It was compassion. अर्जुन के अंदर कुछ भावनाएं थी, कुछ दया भावनाएं थी। It was compassion misplaced. परंतु वो दया जो थी वो गलत जगह पे लगा है। Because if somebody does something wrong, he needs to be punished. क्योंकि अगर कोई कुछ गलत करता है तो उसको दंड मिलना चाहिए। By the law of karma, he will be punished. और कर्म का नियम भी इस तरह से करता है कि उसको So दंड better is punished now than later. बेटर उसको अभी दंड मिल जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो कर्म का नियम तो उसको दंड देगा। So we have to understand that it's not that everybody can create his own religion. Religion is made by God. तो ऐसा नहीं है, हमें समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति अपना धर्म बना सकता है। Dharman hi sakshat bhagavad pranitam. That's the verse. Religion is made by God. धर्म भगवान के द्वारा ही बनाया जाता है। Not that somebody can start his own cottage industry of having a new religion. ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ इंडस्ट्री बनाए जिससे धर्म नया धर्म चालू करे। There's so many religions in this world. बहुत सारे धर्म और भी। But basically speaking, they're concocted. They're not based on shabda hearing, they're based on mental speculation. ये धर्म जो है आध्यात्मिक शब्द या शास्त्र पे आधारित नहीं है, ये मानसिक धारणा पे आधारित है। How do we come to knowledge of God?
तो उनमें भगवान का ज्ञान कैसे मिलेगा? By Shraddha, श्रद्धा के द्वारा भगवान का ज्ञान मिलता है। hearing. Hearing. श्रद्धा और श्रवण, श्रद्धा से हम श्रवण करते हैं तो भगवान का ज्ञान। Jiva Goswami said there are three ways of knowing. तीन प्रकार के तरीके हैं ज्ञान प्राप्त करने के। One is sensory perception, pratyaksha. अपने प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, इंद्रियों से जो प्राप्त करते The हैं। sun is this big, according to that. When प्रत्यक्ष you, प्रमाण के आधार पर सूर्य जो है इतना बड़ा होता है, to the senses, sun is this big. सूर्य इतना बड़ा होता है। Warm in the morning, hot at noon, particularly in India. In India like hell. And in the evening, pleasant. भारत में दिन में बहुत गर्म होता है, शाम को थोड़ा ठंडा होता है। That's according to perception. तो ये इंद्रियों के बोध के आधार पर। That's not the sun. ये वास्तविकता नहीं है। Part of the sun. That's a partial realization of the sun. ये सूर्य की पूर्ण अनुभूति नहीं है, आंशिक अनुभूति है। More advanced is anumana, that we, by logic, reason, argument, research, speculation, we come to the understanding the sun is so big and that, so hot. प्रत्यक्ष से थोड़ा ऊपर अनुमान होता है, क्योंकि अनुमान प्रमाण से हम कुछ समझ सकते हैं, लॉजिक के द्वारा समझ सकते हैं कि भगवान जो सूर्य जो है बहुत बड़ा है। But even if you look through the most modern radio telescope, we still depend on our eyes, and the eyes are imperfect. परंतु भले हम कितने भी टेलीस्कोप से देखें, परंतु अल्टीमेटली हमें अपनी आंखों से देखना होगा, आंखें पूर्ण नहीं है। Therefore, our conclusion may be imperfect. इसलिए जो हम अंत में अंतिम निर्णय निकालेंगे वो सत्य नहीं होगा। In Switzerland, the scientists established a huge particle accelerator. स्विट्जरलैंड में कुछ वैज्ञानिकों ने what they established? Particles, atomic particles are accelerated. उन्होंने नाभिकीय सूक्ष्म कणों को ध्वनित करने का प्रयोग किया By magnets. चुंबक के द्वारा, मैग्नेट के द्वारा। Racing around the particle is accelerator is about 30 kilometers diameter. It's gigantic in the mountains. Gigantic. 30 किलोमीटर दूर तक वो नाभिकीय कणों को तेज अधिक स्पीड में चलाया गया। Cost billions of dollars, trillions of dollars. और इस बहुत महंगा प्रोजेक्ट था, कई बिलियन और कई ट्रिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट था। Why do they do this? They try to understand the origin of the Big Bang. वो क्यों उन्होंने किया? क्योंकि वो बिग बैंग को समझना चाहते थे। Artificially, they try to create a Big Bang. आर्टिफिशियली वो बिग बैंग को देखना चाहते थे। Particles run as this, and then part of the particles run this way, and then they collide with the others. It's a collider. तो अलग-अलग कण जो है अलग-अलग दिशा में जाते थे, एक दूसरे से टकराते थे। So particle collide, and this way they think they come to the understanding of the Big Bang. Huge. वो इस प्रकार से कणों को एक दूसरे से टकराएंगे तो वो सब उनको लगता था कि हम बिग बैंग के बारे में समझ जाएंगे। When they started this machine, large amount of scientists said very dangerous. You may create a black hole. Many scientists say very dangerous experiment. तो जब ये उन्होंने मशीन चालू करने वाले थे, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बोला कि ये बहुत खतरनाक परीक्षण हो सकता है, क्योंकि इससे आप ब्लैक होल बना। That black hole may devour the whole creation. और ये ब्लैक होल पूरे संसार को खत्म कर सकता है। A lot of scientists said that. बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बोला है। So let's try it out. Let's see what happens. तो लोगों ने बोला कि ठीक है, करके देखते हैं। Let's try it out. Let's try it out. Let's try this out. Let's see what happens. Let's this, that. Opening bottles, not seeing the consequences. तो वैज्ञानिकों ने फिर इसी तरह से किया कि ट्राई करके देखते हैं। इसका मतलब है कि बॉटल खोलना और बिना परिणाम को जाने। That's what Prabhupada said before he died. He said, you know how to open bottles, you don't know how to close them, you start so many new things, you don't see the consequences. जाने के पहले कि आप बोतल को खोलना जानते हैं पर बंद करना नहीं जानते हैं। आप कार्य करना जानते हैं पर उसके परिणाम को नहीं सोचते हैं। And so many modernist ideas come from the West. तो बहुत सारे ऐसे आधुनिक जो आइडिया हैं वो पाश्चात्य देशों से आते हैं। In the Kami society, even in ISKCON. और even in ISKCON. ISKCON के अंदर भी जो आइडिया आते हैं वो कर्मी सोसाइटी से आते हैं। Because people take shelter in their own mind. क्योंकि लोग अपने मन का आश्रय लेते हैं। So by pratyaksha, sensory perception, you cannot come to truth
By mental speculation you can come to the truth. You can come to truth only by shabda, by hearing. तो प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों के द्वारा आप सत्य को नहीं समझ सकते। सत्य को समझने के लिए आपको केवल श्रवण करना होगा। Therefore it says, Chanakya Pandit said, the king sees through his spies. इसीलिए चाणक्य पंडित बताते हैं कि राजा अपने गुप्तचरों के द्वारा देखता है। Spies. गुप्तचर। Even Ramachandra had spies. गुप्तचर। The cow sees through the nose. गाय जो है वो नाक से देखती है। The cow sees through the nose. गाय नाक से देखती है। As soon as you put your hand there, she goes, she's next to your hand. हाथ गाय के सामने रखते हैं तो गाय उसको नाक से सूंघती है। Right? She tries to understand you. वो आपको समझना चाहती है। She has discretion. उसको इस प्रकार की अनुभव होता है। Like here you never see cows grazing in the fields. I have not seen that. यहाँ पे हमें उतना नहीं दिखता है कि गाय खेतों में खलिहान में चलती है। I've been preaching in Ireland. All of Ireland is green of meadows where cows are grazing. मैं एक ऐसी जगह पे प्रचार करता था जहाँ पे पूरा आयरलैंड ऐसे The farmer puts the cows in one field. बहुत सारी गाय एक खेत में चलती रहती हैं। They're grazing completely the grass down to this short. और घास को पूरे उस खेत की पूरी घास को वो चर लेती है। But then you will see, if you ever go, in the middle of the field there are so many spots where there's very green grass, this big, and the cows don't go there. They don't eat, although that grass is much greener than the other grass. Why don't they eat that? और तो आप जब खेत में जाएंगे तो आप देखेंगे कुछ जगह पे ऐसे बहुत हरी घास होती है, बहुत ऊंची भी होती है, पर गाय वहाँ नहीं जाती। Anybody has an idea why they don't eat that grass that is most green? क्यों कोई बता सकता है कि वो घास इतनी हरी है तब भी गाय वहाँ पे क्यों जाते हैं या क्यों नहीं जाते? Why is that grass more green than other grass? वो घास दूसरी घासों से ज़्यादा हरी क्यों है? What's the answer? इसका उत्तर क्या हो सकता है? The answer is, the year before, the cow passed stool on that place. उसका कारण है कि एक साल पहले गाय ने वहाँ पे गोबर किया था। So that grass is greener than all the other grass. तो जिस स्थान पे गोबर किया था वहाँ पे जो घास उगती है वो ज़्यादा हरी होती है। The cow is not bewildered by the color. Said, oh, very nice color, let's go for that. तो गाय जो है वो उस रंग से प्रभावित नहीं होती है। She uses his nose. वो अपने नाक को उपयोग करती है। Doesn't smell good. वो देखती है कि Because she sees through the nose. तो वो अपने नाक से देखती है। Next year, that's the first spot they go. When they graze, first they go to these green spots that they rejected the year before. और अगले साल वो उस जगह पे ग्रीन स्पॉट पे सबसे पहले जाएगी। Because it doesn't smell anymore. क्योंकि तब तक उसकी स्मेल नहीं आती। Cow has discretion. तो गाय के पास भी इस तरह से Cow sees through the king sees through the spies because he has discretion. तो जो राजा है वो गुप्तचरों के द्वारा देखता है। Cow sees through the nose. गाय अपने नाक के द्वारा देखती The है। human being sees through the mind. मनुष्य अपने मन के द्वारा They have no discretion. परंतु मनुष्य कुछ If it feels good, they do it. If it feels good, they do it. अगर उनको अच्छा लगता है तो करते हैं। People have illicit sex and all these things because no discretion. बहुत सारे लोग पाप काम करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनको अच्छा लगता है। Living like animals. पशुओं के जैसा रहना चाहते हैं। If it feels good, do it. परंतु उनको अच्छा लगता है इसलिए करते हैं। And the sage, he sees through Shastra. और साधु जो है वो शास्त्र के द्वारा देखते हैं। That's why Prabhupada, he speaks according to Shastra. इसलिए प्रभुपाद शास्त्र के आधार पर बोलते हैं। Very strongly. बहुत पूर्ण रूप से। You know, whatever Shastra says, Prabhupada says. जो भी शास्त्र कहता था वही प्रभुपाद कहते थे। Like there's this famous verse in Bhagavatam. What is it? भागवतम में एक प्रसिद्ध श्लोक है। Let me just see it. One second. Yeah. Where's that verse? Svavidvara hosta kara samstuta pashu. That verse. Men who are like hogs, dogs, camels and asses never praise and glorify the Supreme Lord. That verse, right?
भागवतम में दूसरे स्कंद में एक श्लोक है जो बताते हैं सभी वरा गोष्ठधरे संस्कृता दोषा वसु नयत कर्ण पथों पे तो जातो नाम मना कीजिए। Bhagavatam has judged humanity 5,000 years ago. भागवतम में ये 5000 साल पहले बताया गया था कि जो लोग पशु के समान होते हैं। We may feel sympathetic to hogs, dogs, camels and asses. हमें हो सकता है ऐसा लगे दया का अनुभव हो कुत्तों के लिए और गधे के लिए। Bhagavatam doesn't have that foolish mercy. परंतु भागवतम के शब्दों में वो मूर्खतापूर्ण दया नहीं। Nor should we associate asat sanga tyaga, reject unwanted association. भागवतम बताता है कि आपको असत संग जो गलत संग है उसका त्याग करना चाहिए। So the same way Prabhupada, he would follow Shastra. तो इस तरह से प्रभुपाद शास्त्र से हमेशा There was one famous social worker. Prabhupada was in charge for the social department of the state of Victoria in Melbourne. Prabhupada met him. प्रभुपाद एक विक्टोरिया स्टेट के एक समाज सेवक से मिलते हैं। What did Prabhupada say? प्रभुपाद उनसे बोलते हैं। He says, what is the value of the opinion of people when people are like dogs and asses? प्रभुपाद बोलते हैं जब लोग जो हैं कुत्ते और गधे के जैसे हैं तो वो जो बोल रहे हैं उसका क्या मतलब होता है? Social workers said some people say this, some people say that. Problem, what is the use of opinion of dogs and asses? तो समाज सेवक ने बोला कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। प्रभुपाद ने बोला है कुत्ते और गधों के बोलने का क्या सुनना है? What is the use of taking the opinion of an ass? गधे के मत को लेके हम क्या करेंगे? This vox populi, taking the opinion of the public, is degrading the whole society. ये पब्लिक का ओपिनियन लेना ये पूरे समाज को नीचे गिरा रहा है। Like you have still, Indian villages are still pristine. भारत के गांव अभी भी बहुत कुछ अच्छे हैं। And now Hollywood comes in, Bollywood comes in. अभी हॉलीवुड बॉलीवुड भी आ रहा है। And all the families modern families become degraded. और जितने भी लोग इतने आधुनिक होते जाते हैं वो बिगड़ते जाते हैं। Right? Is that true? Yeah. You agree? Yes, become degraded. When I came to Bengal 50 years ago, women were very respectful to men. जब मैं 50 साल पहले बंगाल आया था तो लोग बहुत सम्मान। Last year, in front of a lot of people, one woman took the hand and smashed her husband into the face. There was a policeman there. Said, "Don't you do something about it?" पिछले साल मैं देख रहा था वहीं पे एक स्त्री ने अपने पति को बहुत सारे लोगों के सामने जोर से थप्पड़ मारा। Where does that come from? वो सब कहाँ से आ रहा है? From the West. वो पाश्चात्य देशों से आ रहा है। That's what Bhakti Siddhanta said. The West has to be destroyed. इसकी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि पश्चिम देशों का विनाश होना चाहिए। This influence is coming from the West, like Prabhupada says, vox populi, the opinion of the public is degrading modern society, and ISKCON too. प्रभुपाद ने जो बताया कि ये जो सभी का मत लेने का स्वभाव है, ये पूरी सोसाइटी समाज को बर्बाद कर रहा है, ISKCON को भी बर्बाद कर रहा है। Listen to this nectar. इसको सुनिए। If the public is composed of drunkards, smokers, meat eaters, gamblers and women hunters, what is the value of their opinion, Prabhupada said? प्रभुपाद बता रहे हैं अगर संसार के लोग मांस खाने वाले हैं, जुआ खेलने वाले हैं, अवैध संग वाले हैं तो उनकी बातों को क्या सुनना है? Why should I take the opinion of first-class men? बुद्ध क्लास लोगों के मत को मैं क्यों सुनूं? What Krishna says, that is standard. जो कृष्ण बोलते हैं वो वास्तविकता है। Krishna says, Krishna is the supreme and his version is final. कृष्ण सबसे बड़े हैं, उनके जो शब्द हैं वो पूर्ण हैं। When I introduce the principle no illicit sex in life, when I introduce the principle no illicit sex, जब मैं संसार लोगों को ये सिद्धांत बताता हूँ कि अवैध संबंध नहीं करना है, I did not ask for opinion. मैंने किसी को It must be done. ये करना पड़ेगा। Our program is not vox populi. तो जो वास्तविक लोगों का मत लेना है उसका कोई We say what scripture says. जो शास्त्र बोलते हैं वो हम कहते हैं। Not so in modern society. तो आधुनिक समाज में ऐसा नहीं होता है। Yeah, we had a court case in Ireland. One of our boys, Brahmachas, was arrested in the middle of Mangala Arati. Police came, arrested him. हमारा एक कोर्ट केस चल रहा था तो एक ब्रह्मचारी था मंगलाती के बीच में पुलिस ने आके उसको
asked the policeman, why you arrest this man? पुलिस से हमने पूछा कि आपने इसको क्यों अरेस्ट किया? We cannot tell you. We have warrant. The judge wants to talk to him. पुलिस ने बोला कि हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि जज इनसे मिलना चाहता है, हमारे पास वारंट है. Put him in jail. उसको जेल में डाल दिया. The next day the man called. The boy was on the telephone. और अगले दिन उस बच्चे ने कॉल किया. He said, I smuggled some bang. Bang. Hashish, bang. मैंने उसने बताया कि मैंने कुछ भांग को स्मगलिंग किया था. Not much, this much. बहुत थोड़ा सा भांग मैंने स्मगलिंग. My lawyer said, you should come and speak to the judge. तो वकील ने बोला कि आप हमें जाके जज से मिलना चाहिए. So I came to the court and the judge said there was a petty case in court, small cases. Somebody beat his wife, somebody stole something, somebody did that, not criminal court. तो मैं कोर्ट में गया, वहाँ पे कुछ छोटे ऐसे केस चल रहे थे, किसी ने अपनी पत्नी को मारा था. That's so we have this case, Mr. Brinkman, are you here? I said, yes, Your Honor, I'm here. जज ने बुलाया कि हमारे केस को बुलाया, तो हमने बोला कि हाँ आप यहाँ पर हैं. So I heard you want to talk to me. तो जज ने बोला कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं. I said, yes. मैंने बोला हाँ. So speak. उन्होंने बोला बताइए. I said, Your Honor, I said, jail is there to rectify people. मैंने बताया कि जेल जो है वो तो लोग सुधारने के लिए है. Is that true? ये सच है. Yes. He said, he's already rectified. मैंने बोला कि ये तो ऑलरेडी सुधरा हुआ है. We don't take any drugs. हम कोई ड्रग्स नहीं लेते हैं. Not even tea, not even coffee. चाय कॉफी भी नहीं लेते हैं. He's rectified. ये ऑलरेडी सुधर चुका है. We are non-violent, we don't kill animals. हम पशुओं को भी नहीं मारते. No meat, no fish, no eggs. कोई मांस और मछली नहीं खाते. We don't gamble. जुआ भी नहीं खेलते हैं. We have no sex. हम कोई अवैध संबंध भी नहीं बनाते हैं. The judge said, तो जज ने इस तरह से अचंभित हो गया. no sex. जज बहुत आश्चर्यचकित होकर बोला कि I said, only in marriage. तो उसने वो अचंभित हो गए जान के कि हम विवाह के अलावा कोई संबंध. The judge said, that is worse than hell. Take him with you, he is sufficiently punished. जज ने बोला कि आप जो करते हो तो एक नरक से भी ज़्यादा खतरनाक है. बेटर है इस व्यक्ति को अपने पास ही ले जाओ. That's modern society. ये आधुनिक समाज है. So I want to wrap it up. My time is up. Thank you very much for listening. I wish you all the best in your spiritual life. मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ सुनने के लिए. आप आशा करता हूँ आपका. This is the greatest society on earth. This is the greatest society on earth. This ISKCON is the greatest society on earth. इस संसार में ISKCON जो है सबसे बड़ा समाज है. We have very high standards. हमारे सबसे ऊंचे. It may take some time. हमारा हो सकता है कुछ समय लगे. Till ISKCON becomes perfect. ISKCON पूर्ण रूप से सही होने में कुछ समय लगता है. Prabhupada made a lotus flower. He painted with his own hand. I have seen that lotus flower with my own eyes. Prabhupada painted a lotus flower with ISKCON inside. प्रभुपाद ने एक कमल को बनाया था, उसके अंदर ISKCON लिखा था. On the old logo you can see this lotus flower like this stretched out like an oval lotus flower. इसके पुराने लोगों में हम देखते हैं कि जो कमल है उसके अंदर ISKCON लिखा हुआ है. So Brahmananda asked Prabhupada, Srila Prabhupada, why are you putting ISKCON into lotus flower? प्रभुपाद से ब्रह्मानंद ने पूछा कि आप ISKCON को इस कमल के अंदर क्यों रख रहे हैं? And Prabhupada said, ISKCON, like a lotus flower, it comes from the dirt. Something very beautifully comes out of the dirt in due course of time. प्रभुपाद ने बोला ISKCON एक कमल के जैसे है, जैसे कमल कुछ गंदगी से आता है, परंतु सबसे सुंदर हो जाता है. It takes time. समय लगता है. One time, this is the last thing I'm going to tell you, there was a team of very big gentlemen coming to visit Prabhupada in Bombay. बॉम्बे में एक बहुत बड़े व्यक्ति प्रभुपाद से मिलने के लिए. And they said to Prabhupada, Srila Prabhupada, unless you assign a successor, your movement will not go on. उन्होंने बोला कि प्रभुपाद जब तक आप अपना कोई सक्सेसर And Prabhupada said, my spiritual master did not establish a successor. And these people are all young people. We were 19, 18, 25, 26. These were the oldest people in our movement. How can I assign a successor? They will fight. So the gentleman said, then your movement is finished.
तो जब उस व्यक्ति ने बोला तो आपका संस्था खत्म हो And जाएगा। Prabhupada said, no. प्रभुपाद ने बोला नहीं, ऐसा नहीं He होगा। said, so many things already happen in our society. प्रभुपाद ने बोला कि हमारे समाज में ऑलरेडी इतनी सारी वस्तुएं हो गई हैं And so many things will happen. और बहुत सारी वस्तुएं होंगी, But this is Lord Chaitanya's movement, and it will be 100% successful. और ये चैतन्य महाप्रभु का संस्था है, ये पूरी तरह से सफल होगा। ठीक है? Okay? Srila Prabhupada ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Go Premanadari.